pills of while she was on call with him. Her boyfriend got worried, informed her parents, after which she was managed at a home wherein she was made to vomit and drink fluids. As per informant, she then started reporting of heaviness in head most of the time of the day and would feel like large weight has been kept on her head. Although she would be able to carry out her daily activities and would even go to work, headache would still persist. It would be generalized, non-radiating, aggravated by loud noises like traffic, relieved on its own after 6 to 7 hours, and would occur mostly during winters with no diurnal variation. Would not be associated with nausea, vomiting, ghabrahat, visual difficulties during the episode. These episodes started occurring frequently with one episode weekly. After she and her boyfriend decided to get married in a temple without informing their relatives, but only their parents. Patient convinced her parents and husband not to tell the brothers about their marriage, as they warned her that they would kill both of them if uh, if they found out about their marriage. In December 2021, when her husband, relatives, and sister visited them and they went out for lunch, she appeared silent and was not seen interacting with her in laws. When they left, her husband asked her why is she not interacting. She reported that she was having a headache. Her husband got irritated and regarding her consistent complaints of headache and took her to a mental health professional for the treatment. On taking prescribed medication, she was started reporting of improvement in complaints of headache and was then shifted to an antidepressant medication. After which she started reporting of dizziness. As reported by the informant, she would be seen crying out loud with her hands twisted. She would be seen shouting and would say, "मेरे भैया मार देंगे हमें, मेरे माँ बाप भी मार देंगे, मुझे सिर्फ आपके साथ रहना है." She would keep crying, even her husband would try to console her. After 15 to 20 minutes, patient slept and was unaware of the episode the next day. On noticing the changes in her behavior after medications, her husband consulted a mental health professional and was again shifted to the medication she reported improvement on for 20 days. Patient then reported improvement in her complaints of consistent headache. After a month of treatment, patient was shifted to an antipsychotic haloperidol 3 milligrams in two divided doses and took the treatment for 2 days. She then started reporting of dizziness with slurring of speech, tremulousness after taking the medications. After 2 days, citing no improvement, her husband consulted a neurosurgeon and was started on olanzapine 5 milligram. After starting the new treatment, she reported of slurring of speech, rigidity in the lower limbs, tremulousness, deviation of mouth after 1 day. Citing these complaints, patient was brought to the emergency department of SMIH and was given injectable promethazine with improvement in rigidity, tremulousness, slurring of speech, after which she presented to the OPD with complaints of childlike behavior and over talkativeness for 1 day. So informant is Mr. Bharat Mani. He's 26-year-old male radiologist technician in Chandra Diagnostic, Dehradun. Reliable, the history given is clear, consistent, coherent, given in a chronological order, corroborated among both informants, her husband and herself. History is reliable and adequate. Complaints are insidious in onset, continuous with a progressively deteriorating course. Chief complaints being of impulsive behavior, heaviness in head, irritability, and generalized body pain for past 2 years. There is no history suggestive of specific developmental disorders of speech, no history suggestive of motor incoordination, no history of any reckless behavior and breaching of rules, no history of thoughts being introduced into or taken away from the mind by external agency against the will, own thoughts being heard out loud, being known to others, no history of sustained over cheerfulness, over religiosity, big planning or over grooming, no history of repetitive thoughts or compulsive acts. There is no history suggestive of head injury, loss of consciousness, abnormal body movements associated with incontinence, tongue bite, frothing from mouth, uprolling of eyeballs,
memory impairment, spells, injury, blurring of vision, or double vision. And there is no history of any substance abuse. Her treatment history. Any questions? Till here? Any questions or doubts? One episode of self-harm. 2 episodes of self-harm. One was hesitant cut, and other were 20. She took 20 pills of contraceptives. When was that? That was after 6 months of the self-harming. So they're 6 months apart. 6 months apart. Any precipitants? So the issues with the relationship issues with the boyfriend. And, when she settled down? She has settled down 6 months back only. 6 months back. Yes. See, and so they got married, court registered the marriage 10 days back only. 10 days back. And it's the same person she was. Same person, yes. And this happened before marriage or after marriage? Before marriage. And after marriage? After marriage also, she is consistently reporting of headache, and she was prescribed multiple medications, antipsychotics, after which she complained of slurring of speech. She got dystonia and was presented to emergency with dystonia and deviation of mouth. Current age? Current age is 22 years. So everything started 20 years of age. 20. Before 20 years of age? So history was not corroborated with the parents as they were not in talking terms, and they got married against the will of the parents. Any precipitating factor, predisposing factor in this case, or modifying factor, or we say perpetuating factor? So it's usually, according to the informant, it perpetuated only after the parents did not allow her to talk to the partner and refused her to marry him. Since when they were in this courtship period? They were 6 years. 6 years. Yes. And from the initial point only they knew there will be issues with the marriage. Yes. So wouldn't that build up of this thing? So they knew, but predisposing? So they knew, but she lied about the caste to her parents, but she knew. She knew. She knew, and her husband knew that this thing will not be accepted by the parents. Yes, sir. And this was brewing up for last 6 years. 6 years. And they were in a committed relationship for last 6 years. And then 2 years, 6 months back or recently they got married. So whether this 6 years phase, wasn't it a build-up of a stressor, kind of a stressor? Yes. So couldn't we conceptualize this as a predisposing? Was it then culminated in last 2 years? Yes, I think she married at 20 years of age. 20 years of age. Okay, she's 22, no? Yes, sir. She married at 21. So why so this little early citing current times? Why? Did you ask them what is the reason? Whether her husband wanted to settle down? So her husband wanted to settle down because he was settled and he wanted her to pursue BAMS further. But what is acceptance by her in-laws? So in-laws also not. Parents and in-laws. In-laws both the families. Both the families. Any other questions? Well, as we have written the history about the medication and the dosages, can we write like patient was shifted to olanzapine on the history or the treatment history. Anything which has taken a turn, you can say with treatment. No, this thing has reduced, citing treatment. This thing has reduced because of the treatment or faith healing. But details of treatment history, otherwise that will break the flow. हम लोगों ने फिर हिस्ट्री में ही बता दिया कि वो ओलैंजापिन दे रहे हैं, तुम लोग बायस कर दिए ना कि साइकोस के बारे में बात करो, प्रॉब्लम हो जाएगा. In the sense कि the drug names or everything should be avoided. तो साइड इफेक्ट हुआ है, say side effects. क्या साइड इफेक्ट है? You have to basically maintain that suspense till the treatment history unfolds. Illness graph. Any other question to her? Onset of the illness. After marriage, were the same symptoms present or no other symptoms?
No other symptoms except of headache. Just anger outburst was present intermittently. So regression. Regression is after admission in the hospital. So her treatment history, she was started on flupentixol and Any negative melitresin. symptoms? Anyone has any question? Done? Dr. Shobha? No question. Negatives to I have seen motor incoordination. What do you mean by that? तो मतलब क्या है? Motor incoordination is देखो. No history of any motor incoordination. Saying fine motor movement and coordination. What do you want to rule out? So any organic Organicity में more commonly क्या पूछते हैं? Loss of consciousness. loss of consciousness. Seizure तो नहीं. I mean, neurodevelopmental disorder you wanted to rule out. Basically, to avoid something which is really difficult, it would be more. We can basically change it to something else, or some other thing. Or the repetitive thoughts. No history of any repetitive thoughts. You're sure there are no history of any repetitive thoughts. So repetitive intrusive thoughts. No irrational thoughts, unwanted. Unwanted. Anything you can write, but it should signify कि वो specifically आप कुछ इसमें कहना चाह रही, करना चाह रही. Anything else in negative history? सीखिए, तो और ऐड कर सकते. जो negative में नहीं है वो positive में होना चाहिए. So low mood history. Low mood? History of any low. उसको लिखा है. हाँ, next slide हम मिस कर दिए. Next slide मैंने सारा इसमें कवर कर दिया है. और जाने से ठीक है. Yes. हाँ, so जो depressive symptoms हैं, जो आपकी हिस्ट्री में आए, उसके अलावा वो सब नेगेटिव हिस्ट्री में आएंगे. But because depression, anxiety is the most common disorders ना. तो सबसे कॉमन डिसऑर्डर जो हमें सोसाइटी में मिल रही हैं वो तो हमें नेगेटिव में डालने पड़ेंगे. नहीं तो रैशनल इज दिस. तो एंजाइटी, डिप्रेशन, साइकोसिस, ये सब तो आना ही है. Maybe rare disorders which are not really present if your case is not inclined to कि हम लोग मतलब ऑटिज्म का डाल रहे हैं, वो सब डाल रहे हैं. दे आर रेयर थिंग्स है ना. आप कह देंगे हिस्ट्री हमें पहले की नहीं पता है, तो फिर हम लोग वहाँ पे अगर शुरू में कह देंगे कि हिस्ट्री इज नॉट रिलायबल और इनएडिक्वेट फॉर द ऑनसेट बिफोर द इलनेस, तो फिर हम लोग उस चीज को कमेंट नहीं करेंगे. और रैशनल है, कॉमन चीज है, उसको कमेंट तो करना पड़ेगा. ट्रीटमेंट हिस्ट्री. So she was started on tablet flupentixol and melitresin on 17th of January, which she took for 30 days with adequate. There was an adequate response and good compliance. The side effects were constipation, and then she was subsequently shifted to clonazepam 0.5 milligram tablets BD for sleep. And citing there was an improvement in sleep, but she also reported of excessive sedation with the drug. She took a tablet dothipin 25 milligram on 25th of January for 2 days, after which there was episode of crying spells and odd behavior noticed for 15 to 20 minutes, and she took tablet diazepam and imipramine, which she did not take it. And then she was started on tablet haloperidol 1.5 milligram, 3 milligram in 2 divided doses for 2 days, after which she reported of dizziness and EPS. And so after not reporting improvement with these medications, she was then shifted to tablet olanzapine 5 milligram, which she took for only 1 day, after which she developed dystonia and she presented to emergency. So olanzapine is because of dystonia is because of olanzapine or something else? So she was taking haloperidol also. Along with that? Along with that. Next day also she took both? Yes.
So, past history. Patient was diagnosed with a case of pleural effusion in 2007, for which she was treated. In order to solidify that, we have currently planned for a pulmonary reference. History of hydronephrosis in 2016. Treatment was taken for the same. Records are not available. History of PCOS. Treatment done for the same. Family history. She is fourth in order out of four siblings. History of hydronephrosis. Yes. Okay. Yeah. So she is fourth in order out of four siblings of a non-consanguineous marriage. Patient lives in a nuclear family with her parents and siblings, currently living with her husband. No history of any psychiatric illness in family. Patient had a cordial relationship with parents and siblings. Economic head of the family was father. Emotional head of the family was father. Patient is closest to her mother since childhood. Husband is supportive towards the patient and has sympathy towards her illness and understands the importance of regular follow-ups and compliance. Any comments? Family tree. हम लोग कितने अपने सीआरएफ में फैमिली ट्री बनाते हैं हम यहाँ भी बना देना. You can hand draw and paste it, or you can have a graphical one. Any comments? You can run Genogram as well as EcoMap. EcoMap helps you that understand better about the relationship between the family members. Social support and other things. But when we are saying there was a discord with the parents, for last 6 years they were in courtship, and when this news came up, when they broke this news to the parents, when did she inform the parents about this? So this was 1 year back. So relationships are cordial. Currently cordial with the parents, father and mother, but not with the brothers. They don't know about the marriage. But whether they have accepted the marriage, parents. This can be a very big stressor now. Even if maybe they would have subsumed their emotions, but they accepted the groom now, accepted a new relationship. Maybe the emotions are more volatile from the brother side, which generally happens in a society. So maybe so that has to be put here, because then that becomes very important. And that is why, Mr. Srinivasan's role will come. Because then he needs to either do this, sort it out as a family therapy or something. According to her, even she actually had 6 years now, the parents are not accepted. We need to mention the parenting style of the family. Why she was, because there is lethality, prevalence to lethality of suicide. So we need to cover it. तो शादी के बाद कितनी फैमिलीज हो जाती? So two. One is your blood family, blood relation. One is your adopted family. Adopted family के बारे में भी you need to cover, because that might have psychosocial implications, which may drag the problem. So that is why here वो आना चाहिए, go both the families, and whether they are staying with the in-laws or not. तो वहाँ पे ये सब family history नहीं आएगा सारे. So, but they are not in talking terms with the in-laws. ये यहाँ बताना है, सब यही तो बताना है. Anything significant in birth, developmental history? So the developmental history was not attained as. And did you mention this in the starting of the history? Because जैसे आप start करते हैं, you have to say reliability. So reliable and inadequate. And adequacy, and there only you can say कि these domains are not available. तो आपको बाद में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा. Still becomes important, like somebody who is everything was fine. If we have not got the then also the history becomes important. Yes. Any parts of the history you don't have the information, it becomes important. So if you have enough For the diagnosis of. there is no relevance of the, like we've got enough information to make the diagnosis.
That is a different thing. You start a history, or a person has come to us for which we have to give a conceptualization. Which parts of the history we don't have? वो तो हमें शुरू में बताना पड़ेगा ना कि these domains history we don't have. What implication they carry वो तो बाद में end में decide करते हैं. But ये domains नहीं है हमारे पास, ये तो हमें शुरू में बताना पड़ेगा. Inadequate. That means we are not able to reach Diagnosis. वो inadequacy जो है वो जो हमारे पास information की inadequacy है, अब वो क्या हमें diagnostic terms में प्रॉब्लम बनाने दे रही है. कोई एक महीने की एंजाइटी लेके आया है 30 साल का और उसका हमारे पास 15 साल के पहले की हिस्ट्री नहीं, तो वो हम लोग अभी करंट डायग्नोसिस तो बना ही सकते हैं. इनएडिक्वेट तो हमारे जो उसका जो बचपना है वो कैसा है वो हिस्ट्री है नहीं, तो हम उसको एडिक्वेट कैसे बोलें. या यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं, या तो अभी कहना चाह रहे हैं कि डायग्नोसिस के लिए हमारे पास एडिक्वेट सामान है ना, ये तो है. ऐसे तो आपको कुछ नहीं चाहिए, ओपियोइड वाला है, आपने कहा हाँ तरफ लगती है, मैंने बताया बना दी डिपेंडेंस खत्म, उसके अलावा उसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं. तो हम लोग हिस्ट्री प्रेजेंट करते हैं. एडिक्वेसी मींस सारे डोमेन्स में एडिक्वेसी फिट है कि नहीं. जो आपको ब्लैंक्स मिल रहे हैं, यू टू टेल पहले ही आपके पास ब्लैंक. आपकी जो करंट प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड मटेरियल है कि नहीं, वो एंड में आप कंसेप्चुअलाइज करते हैं. भाई ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, प्रॉब्लम ये है, ये चीजों में बना सकते हैं. डायग्नोसिस बनाने के लिए वो इंफॉर्मेशन एडिक्वेट है कि नहीं है, वो बात अलग है. प्रोविजन तो बना ही सकते हैं. नहीं मतलब माय पॉइंट इज क्लियर और नॉट. इट डजंट मेक सेंस, क्योंकि हम लोग ऐसे तो फिर हम लोग बहुत सारा चीज करेंगे, जरूरत ही नहीं, जरूरत नहीं, जरूरत नहीं, जरूरत नहीं, जरूरत नहीं. फिर there will be no adequate. मान लो 4 फैमिली मेंबर आए हैं, माता मम्मी पापा भाई बहन आए हैं और एक बेटे को लेके आए हैं. उसकी कौन सी हिस्ट्री में एडिक्वेट नहीं मिलेगी. फॉर एग्जांपल वो साइकोटिक ब्रेकडाउन से एडमिट हुआ, सारी बचपन की मिलेगी, अब तक की मिलेगी, पिछले एक हफ्ते साइकोटिक ब्रेकडाउन में मिलेगी. शायद सेक्सुअल हिस्ट्री नहीं मिल पाएगी, क्योंकि सेक्सुअल हिस्ट्री उससे पूछनी पड़ेगी, तो वहाँ लिखना पड़ेगा सेक्सुअल हिस्ट्री इज नॉट अवेलेबल, मतलब inadequate because of unavailability or patient was not cooperative. Mostly married female ज्यादातर जैसे फीमेल्स है, तो उनके पास कोई बर्थ हिस्ट्री कभी नहीं है, तो inadequate है. वो डोमेन तो inadequate है. आप प्रेजेंटेशन के टाइम पे बोलेंगे, उस टाइम पे जैसे हम लोग हिस्ट्री प्रेजेंटेशन हम बोलते हैं एडिक्वेट एंड रिलायबल, तो फिर हम बर्थ हिस्ट्री का बोलेंगे तब उसी समय आप जब हिस्ट्री शुरू करते हैं वो HOPL नहीं बोलते हैं. बेसिकली यू से कि ऑल द इंफॉर्मेशन व्हिच यू हैव इज रिलायबल और नॉट. उसमें रिलायबिलिटी की भाई लैक ऑफ दैट रिलायबिलिटी आल्सो इंक्लूड्स ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ इट. एंड एडिक्वेसी ईच एंड एवरी सेक्शन. हिस्ट्री तो हिस्ट्री एक हो गया ना, हिस्ट्री तो अलग नहीं होता. एग्जाम में हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन है और फिर आगे कंसेप्चुअलाइजेशन है. 3 पार्ट्स में आप केस कंसेप्चुलाइज करते हैं. हिस्ट्री में जो डोमेन्स आपके पास नहीं है आपको पहले ही बताने पड़ेंगे. तो ये हमें नहीं पता, ये कारण. अब वो कौन कौन से डोमेन्स है तो बताना पड़ेगा. अब ये तो बाद में पता चलेगा ना कि वो डोमेन नहीं है, वो हमारी फाइनल लैंग्वेज बनाने के लिए एडिक्वेट है कि नहीं है, तो बाद में सारी इंफॉर्मेशन एस्टिमेट करने के बाद ही तो कमेंट कर पाएंगे. पहले कैसे करें. जैसे ऐसे हम लोग ऐसे कहते थे कि एडिक्वेट अगर हमारे पास हिस्ट्री के रिगार्डिंग जो मतलब चीफ कंप्लेंट्स प्रेजेंटिंग कंप्लेंट उसके रिगार्डिंग हमारे पास इंफॉर्मेशन पूरा है तो एडिक्वेट, बट जो बाकी सब चीज डोमेन्स है जहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, डिटेल्स आर नॉट वी यूज्ड टू राइट लाइक दिस, तो इसमें मतलब डिटेल अवेलेबल नहीं है, वो एडिक्वेट तो नहीं है. हम शुरू में ये बोल रहे हैं कि हिस्ट्री इज एडिक्वेट टू मेक अ डायग्नोसिस. तो हिस्ट्री बोल रहे हैं इट इज नॉट रिलायबल, नॉट एडिक्वेट. It is history is not reliable, it is not adequate. It is not to make a diagnosis. That is what मतलब I feel कि वैसे ही क्योंकि diagnosis तो बात का part है. That is third section of the presentation. Nothing you should start with biasing the example. और bias नहीं करना है कि पहले से शुरू को पता चल जाए कि स्किज़ोफ्रेनिया केस है, वहीं गड़बड़ हो गया. कहीं ना कहीं वो उसका part बन गया है. We are not talking about very short evaluation. We are talking about what you have to do in a detailed case for this.
और ये एक्चुअली में because then you'll be very very clear, you're telling the examiners कि ये डॉक्यूमेंट हमें नहीं पता, नहीं तो बाद में आपसे पूछेगा, इनमें पूछेगा, अब शुरू में कंफर्म क्लियर कर दें कि ये हमें नहीं पता। अब मान लो कोई न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है तो बात अलग है, इसका प्राथमिक से अगर कोई स्किज़ोफ्रेनिया डिकम्पनसेशन है, उसके चाइल्डहुड अगर बिल्कुल नॉर्मल है, तो अगर वो डोमेन हमें पता भी नहीं है, तो फिर और ऑनसेट क्लियर कट हमें इलनेस की मिल रही है, तो नॉट डिटर अस फ्रॉम डायग्नोसिस। एंजाइटी डिसऑर्डर्स है, किसी को न्यूरोटिक ट्रेट्स हैं बचपन में, तो वो ये एंशियस ओवरवेलमिंग ट्रेट्स हैं, उसकी हमें हिस्ट्री नहीं मिल रही है, और हमें एंजाइटी का एक तरीके से ऑनसेट नहीं मिल रहा है, इट डेफिनेटली इम्पैक्ट अस इन मेकिंग अ डायग्नोसिस। तो ये तो सब कंटेक्चुअल है, ये तो केस टू केस है, ये हम लोग जनरलाइज नहीं कर सकते। एनी अदर काउंटर एक्सप्लेनेशन, कुछ मतलब ऐसा लगता है तो पता कि ऐसा कोई डाउट है, मुझे लग रहा है कि ये मतलब दिस इज द अप्रोच, मे बी पीपल आर डूइंग इट, बट हां ऐसे ही लगता है। We don't know how to make a diagnosis. It is as inadequate. Diagnostic criteria. Yes or no? What I'm saying is it should be inadequate because we haven't gotten the issue, so we don't know if it was important enough or not. So it is inadequate. डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, डायग्नोसिस बनाना है तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ICD-10 डीएसएम में दिए हुए हैं, उसके हिसाब से अगर फुलफिल हो रहा है तो अगर उसमें एक सेक्शन ऑफ आपकी हिस्ट्री नहीं मिल रही है और वो उस डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया उसका लेना ही देना ही नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ता है? So, like you said, a patient is presenting to us with 4 family members who do not know about the patient's substance intake. और हमको clear cut मिल गया psychosis है, सब कुछ है, but we are missing the whole point that this could be cannabis induced. So in that, this is the inadequate history that probably. I would say कि inadequate history regarding substance intake domain you don't have. तो वहाँ पे जब चीफ हिस्ट्री में जाओगे तो आप जब पहले बोल दिया आपने inadequate है तो फिर आप उसके एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाओगे, some unknown substance has been taken by the patient, tentative intake है, तो आप rationalize आपने पहले ही कर दिया, तो फिर आपसे पूछेंगे ये इतना गया था, फिर आप बोलेंगे नहीं इसकी तो मैं नहीं, तो बोलेंगे हमने पहले क्यों नहीं बताया। साइकोसिस हो गया, सब्सटेंस का हिस्ट्री में कुछ नहीं है, तो हम सब्सटेंस उसमें मेंशन ही क्यों करेंगे? नेगेटिव हिस्ट्री वाले नहीं। हाँ, मगर मान लीजिए वो कहीं ना कहीं से एक तरीके से लेकर आ रही थी कि वो कहीं गया था, उसको आके डालती इंडायरेक्ट आपको भी मिल गया, फिर सब में मेंशन है, अदरवाइज अगर मतलब हम फिर अगर कुछ नहीं है तो साइकोसिस कुछ नहीं है तो फिर क्यों करेंगे? हाँ, तो नेगेटिव में डालेंगे, कुछ है बट हमें पता नहीं क्या है, तो फिर हम उसे बोलेंगे कि हाँ हिस्ट्री हमें पता नहीं। कोई पॉसिबिलिटी तो हो ही सकती है, हमें चलो हमें उससे कोई भी आइडिया नहीं है, बट हमारे पास हिस्ट्री भी नहीं है, ये भी कोई केस हमारे पास जनरली गार्जियन बहुत क्लियर होते हैं, नशा लेता है नहीं लेता, जनरली गार्जियन बहुत क्लियर होते हैं। ये है कि अगर आप एक गार्जियन कहता है जनरली बहुत क्लियर होता है ना, जनरली क्लियरिटी कम नहीं आती जब वो शक होता है, तो उसमें क्या होता है, मान लो एक गार्जियन कहता है कि हाँ जी लेता है, एक कहता नहीं लेता है, फिर क्या करोगे? फिर हिस्ट्री में आपको जस्टिफाई कैसे करोगे? फिर रिलायबिलिटी का क्वेश्चन आ जाएगा, फिर आप बोलेंगे रिलायबिलिटी ड्यू टू लैक ऑफ कोलैबोरेशन रिगार्डिंग सब्सटेंस, आप क्लियर कर दोगे। हमारे पास होने से पहले वो तो पेशेंट इज स्टेइंग आउट, तो उसके सारे दोस्तों को कॉल कर ही लेंगे or we get to know कुछ डेटा है, then we can fix it कि हम एक डिफरेंशियल रख सकते, but if we don't get to know anything about it, so why will we mention कि there is a possibility that some patient is करेंगे ये आपके सीधा सीधा प्रकार से मुझे कह रहा है कि नशे का कोई मतलब नहीं है, मैं वेरी श्योर वो नेगेटिव आ जाएगा।
Now start with So pre-morbid personality. She was ambitious and wanted to pursue BAMS course. Social relationship, good social interpersonal relationship with family, would easily make friends, have long-term friends, responsible towards her work and family, would make decisions after consulting her father. Work and leisure, enjoyed listening to music, watching movies, and talking to her family friend members. Mood was stable, would express her inner feelings of anger, frustration, and sadness. Often get angry over minor issues with impulsive acts of breaking things and self-harming behavior. Habits had a regular sleep-wake cycle and rhythmic bowel and bladder habits. Impression was emotionally unstable personality, according to the history given by the husband. traits or disorder. Traits. 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 On general physical examination, she is a mesomorphic built female, body weight of ये जो कौन सा? Husband is giving the pre-morbid personality. So, ma'am, they were in a relationship before marriage, 6 to 7 years before marriage, also. So, he was able to know pre-morbid personality. And can you write this patient makes a decision after consulting with the family because she has taken the decision of getting married against the family? Right. बिल्कुल सही है. अगर ये ऐसा कह रही हैं और बॉर्डरलाइन ट्रेट्स में कौन-कौन से बॉर्डरलाइन ट्रेट्स आपने प्री-मॉर्बिडली बताए जो बॉर्डरलाइन हैं? So, impulsive acts of self-harming behavior. 2 साल में 2 साल में. No, when we say personality traits or personality, that's a repetitive pattern. I would say कि someone going through this turmoil, 2 self-harms are okay. जिस तरह का turmoil से she is going through. तो repeated pattern तो नहीं बोलेंगे. Monthly होता है, कुछ इस तरह का recurrence में होता है. So वो भी 6 months apart हुआ. So, history of trauma. So हम लोग EUPD कहते हैं, जो borderline traits कहते हैं, किन-किन डोमेन से इशू रहता है? So impulsivity, aggression, feeling of emptiness, interpersonal relationship. Yes. आपकी affective instability होती है, impulsivity होती है, then feelings of Abandonment, emotionally. और IAS है. IAS पता है? Yes, sir. कहाँ से पता? इंटरपर्सनल है. तो ये देख, तो वो सब आ रहा है नहीं आ रहा है? प्री-मॉर्बिड में आपने बताया, दोबारा बताओ प्री-मॉर्बिड. फर्स्ट इनके कलीग्स भी बताएं, एज वेल एज सीनियर्स भी बोले, कलीग्स भी बोले. So, according to the husband, mood was stable. She would express her inner feelings of anger and frustration and sadness. Often would get angry over minor issues with impulsive acts of breaking things and self-harming behavior. For past 2 years की history is husband gave. ये जो सिम्टम्स हैं कब से हैं? 2 साल से. 2 साल. ये जो प्री-मॉर्बिड नहीं होगा, मॉर्बिड हिस्ट्री हो गई. 2 साल के पहले से पूछा उनको कि जब ये सब नहीं था शादी के पहले. So तब उसके पहले का बताएं. he didn't report anything, but after her family got to know about their family got to know about them, then it started. This 2 years before, how much they used to be in contact with each other? So only on phone, they never met each तो other. ओरिजिनल पर्सनालिटी कभी कभी लोग कहते हैं ना शादी के बाद आदमी बदल गया. तो भाई अरे ये तो वो आदमी था ही नहीं जो शादी के पहले था. बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ कांटेक्ट. वो वीना डॉक्टर तो वो एक्चुअली इसलिए होता है क्योंकि द डिटेल्स आर नॉट नोन. द डिटेल्स हैव कम आफ्टर मैरिज. इसलिए आप बच सकते थे इसमें कह के कि है ना जो लैक ऑफ कांटेक्ट जो हम लोग रिलायबिलिटी में कहते हैं. प्री-मॉर्बिड वाज नॉट अवेलेबल बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ इन्फॉर्मेंट. और एक इन्फॉर्मेंट है उसका लैक ऑफ कांटेक्ट. Was he used to always be available on the phone for this.
अभी साथ में अगर they would have stayed for 11 maybe तो पता चल जाता, वहाँ बच सकते, मतलब you could have actually saved yourself there. ही 17 साल की होती So temperament. तो टेम्परामेंट हम बोलते हैं, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी की डायग्नोसिस जल्दी बना सकते हैं, 18 से पहले बना सकते हैं। डीएसएम में लिखा था एक बार है, डीएसएम 5 नहीं 4 निकाल के एक बार चेक कर लेना। So on There general, was an issue with antisocial personalities and borderline personalities where एज क्राइटेरिया में आप थोड़ा लेवरेज ले सकते हैं, बट वो पढ़ लेना है, चेक कर व्हाट आई रिमेंबर। डीएसएम 4 है तो अभी चेक कर लीजिए। so on general physical examination, she is a mesomorphic built female, body weight of 55 kg, height of 151 centimeters, BMI of 22, which is a normal range. Any positive findings? So no positive findings, but she had tremors in upper limbs and lower limbs. When she presented to emergency, she had slurring of speech. The husband also reported of deviation of mouth to the right side, and there was tongue tremors were also present for the patient. This was an examination finding. This was an examination finding done in the emergency room. Here. So here there is improvement in tremors. The tremulousness is also reduced, but she's still reporting of difficulty in walking and rigidity. But so is it an adequate thing to say tremors? How we are seeing this type of tremors? so resting tremors. Resting tremors. What is the frequency? Plane, postural. You're saying resting, the postural. The increase in posture, decrease in posture. यहाँ पे ना नंबर कमाने वाला समय है, because this is something which you are more comfortable. ट्रेमर्स का है ना, एक्शन है, पोस्चर है, रेस्टिंग है, ट्रेमर का प्लेन क्या है, एग्रेवेशन है कि नहीं है, एंड बाकी नहीं है, बायलैटरल है, ना टोन कैसी है, then these are suggestive of these, so they give you more marks. यहाँ पे you have to actually give these in more details. So other systemic findings and general physical examination was normal. The tone was increased in both upper limbs and lower limbs at in emergency. Currently, there is no rigidity or increased tone. So mental. What do you want to demonstrate? Tell us. So her childlike behavior. She is talking. Set up कर तो ये सब इसलिए करा रहे हैं, यही चीज एग्जाम में होगी, और एग्जाम के पहले प्रैक्टिस नहीं होगी तो देखिए यहाँ पे पैर भारी हो रहा था और ये हाथ मुंह टेढ़ा हो गया था। सर भारी हुआ था मेरा, तो मेडिसिन लेके फिर उसका ही साइड इफेक्ट हो गया। हाँ, उसने चेंज कर दी थी मेडिसिन। जब भी उसने पागल कर दिया, वो ऐसा लगता है उसे मार हो रहा। कोई परेशानी नहीं, अभी तो सर भारी हो जाता है 2-3, जब से वो दवाइयाँ छोड़ी है तब से सर फिर से भारी होने लगा है।
आप ऐसे ही बोल सकते हैं। नहीं नहीं, अभी दिक्कत हो रही थोड़ी? बोलने में दिक्कत हो रही है और धुंधला धुंधला सा भी दिखता है। चलने में दिक्कत नहीं है? चलने में दिक्कत हो रही है और अभी वैसे चक्कर भी आ रहे हैं। और ये तो ऐसे हंसते हैं सब लोग। कौन? ये देखो हंस रहे थे ना, नहीं कोई। आप भी देखो ऐसे देखो, आप कंट्रोल कर रही हो, आप हंस रही हो, ऐसे तो हंसते हैं। नहीं क्यों हंसेंगे आप? क्यों हंसेंगे? बताना अब चाहते मैं हो? ठीक हूँ। बताना चाहते हो? नहीं, ये लोग हंसते हैं तो समझते हैं मैं पागल हो गई हूँ। मुझे सब याद है, मुझे मैं कुछ भी नहीं भूल रही हूँ। तो कोई भी नहीं समझता। तो हंसते हैं सब लोग। मैं तो अब ठीक अभी हूँ। कोई परेशानी मामला है, किसी चीज़ की परेशानी? अब ऐसा लग रहा है अब डिस्चार्ज कर दिया जाए और मैं घर चली जाऊँ। अब मैं अभी पेरेंट्स को कोई दिक्कत है? वो सब तो घर पे भी सही हो जाएगा ना मेरे से। गुस्सा तो नहीं आता? अब गुस्सा 4 दिन हो गए, गति आ ही नहीं रहा है। पहले बहुत आता था, बहुत गुस्सा आता था। अब तो 3-4 दिन हो गए तब से गुस्सा करते बिल्कुल आ ही नहीं रहा, रोना आ जाता। अब ये 3-4 दिन से नहीं आ रहे, पहले भी आता था रोना, रोना गुस्सा दोनों आता था। पहले रोना भी आता था, गुस्सा भी आता था, हंसना भी आता था। अब बस रोना रोना आता है और गुस्सा करते नहीं आता है, हंसना भी नहीं आता है बिना बात के। मन तो मन कभी कभी खुश भी रहता है, कभी कभी उदास भी रहता है, कभी कभी आवाज भी सही हो जाती है। और जैसे खाना खाती हूँ तो खाना खाते ही ऐसे चक्कर से आने लगते हैं और नशा से होने लगता है और फिर तुरंत ही सर भारी ऐसा हो जाता है और ऐसा लगता है नॉन स्टॉप बोलते जाओ ऐसा होता है। अभी आपको लगता है कि आपको परेशानी है, इलाज की जरूरत है? मुझे बस एक ही प्रॉब्लम थी, सर का भारी होना। अब मैं बस उसी परेशानी को लेकर के डॉक्टर के पास गई। मुझे सब कुछ याद भी है, पागल होता तो कुछ भी याद नहीं होता, मुझे सब याद है। डॉक्टर के पास गई थी सर भारी को लेकर के, उसने मेडिसिन दी, क्लोज़ापाम, डायज़ापाम, लोराज़ापाम, क्लोथिपिन, पता नहीं क्या क्या दे डाला उसने। और थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी हम लोगों से, हम लोगों ने एक साथ खा ली, एक दिन में 3 बार डायज़ापाम, क्लोज़ापाम सारी खा ली, एक ही दिन में 2 दिन तक खाई थी। फिर मैं इतना नशा हो गया, मैं पता नहीं कहाँ, मैं सहसपुर में जॉब करती हूँ, सहसपुर से निकली प्रेमनगर के लिए और फिर प्रेमनगर से पता नहीं कौन सी बस में बैठ गई, प्रेमनगर आ गई मैं। फिर जैसे तैसे मैं घर पे आ पाई। अच्छा ठीक है, एक चीज बताइए प्रिया जी, आपने ये क्यों बोला कि यहाँ पे सब लोग देख के मुझे हंस रहे हैं? अभी ऐसा क्यों? हंसे थे, इन्होंने भी स्माइल की थी। हो सकता है कि आप आई, आप हमसे बात कर रही हैं, उसलिए थोड़े से हम लोग यहाँ पे लोग अच्छा फील किए, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग मुझ पे हंसते हैं, मुझ पे हंसे। मुझ पे हंसना मतलब? मैं जैसे अभी बीमार हूँ ना, सोच रहे हो पागल हो गई है ये, तो इसलिए हंसते हैं। तो उनकी ऐसी मंशा है कि वो आपके बारे में इस तरह का सोच रहे हैं और हंस रहे हैं, तो इससे ये आपको ऐसा महसूस हो रहा है, हाँ, तो इससे परेशानी भी हाँ, यहीं पे लगा है या वहां पे भी लग रहा है? हर जगह लगता है मुझे। कल मैम के पास गई थी, ऐसा 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 नहीं होता है कि, एक चीज बताइए प्रिया जी, ऐसा नहीं होता कि अब ऐसा लग रहा है कि सभी हंस रहे हैं, ऐसा तो संभव है नहीं। तो हर आदमी अपने काम में बिजी है, कोई परेशानी में है, कुछ है, तो आपको ऐसा महसूस हो रहा हो, ऐसा ना हो। मुझे तो आवाज आई थी हंसने की, इन्होंने स्माइल भी की थी। आवाज आती है हंसने की?
किससे हम ऐसी कोई आवाजें आती हैं जो आसपास कोई नहीं होता है, इस तरह की कोई आवाजें? नहीं, ऐसी तो कोई आवाज नहीं आती। अच्छा, अभी आपने बोला, मैडम को बोला कि मेरा खूब बात करने का मन करता है। हाँ, ये लगता है मुझे कि तो मैं बोलो। हमेशा बोलते चलती हूँ, कोई सुने ना सुने बोलते रहूँ बोलते रहो, उससे क्या होता है? कुछ नहीं, अच्छा लगता है। तो कोई बोलते आपके साथ रहती बैठा हूँ। हो, सब सुन रहा हो, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, उनको बोला करो बैठा मैं करें। इनको पकाती रहती हूँ, ये सुनते ही नहीं है। अच्छा, ऐसा करती हैं ये सब? हाँ, ये बोलते हैं। नहीं नहीं, इनका तो फर्ज है और कर्म है इसी करना। सुनते नहीं है। क्यों नहीं सुनते भाई? बिल्कुल बोलते हैं है ना? सर। हाँ। मेडिसिन के बारे में बीच में मन में विचार कैसे आते हैं? जल्दी आते हैं या धीमे धीमे आते देखो, दवाई खा लो ना, हाँ। तब तो बहुत जल्दी आते हैं। हाँ। और जिस दिन दवाई ना खाऊं, उस दिन सब पूरा दिमाग इतना स्लो हो जाता है, ऐसा लग रहा है धुंधला धुंधला दिखता है, सब कुछ स्लो स्लो चल रहा है। हैं? अब देखो, हंस रहे हैं ये लोग। अभी ये हंसी थी। अब देखो, ये आपको महसूस हो रहा है, वही हम कह रहे हैं, ऐसा हो नहीं रहा। हम सब आपकी बात को सुन के, है ना, मतलब आपकी समस्या को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, मैं यहाँ आई तो बोल दिया कि डिप्रेशन है, स्ट्रेस है और दवाई का साइड इफेक्ट है। आपकी उम्र कितनी है? 22। तो जो आप बात करने का तरीका है, ये तो एक 13 साल 14 साल के बच्चे जैसा है। और ये कब से हुआ है पता है? हाँ। मैं आई थी ना, मेरा परसों आई थी ना इमरजेंसी में, तब से हुआ है। अच्छा। अब मैं कभी कभी सही भी बोलती हूँ मैं। थोड़ा सही बोल के दिखाओ। ऐसे अभी रियल जो प्रिया बोलती हैं ऐसे बोलना। अभी नहीं निकलेगा। अच्छा। अभी निकलेगा नहीं। और जैसे सो के उठती हूँ, मैं कहती बहुत देर तक ना बोलूं, मैं बहुत देर तक चुप रहूं, तो मैं जब बोलूं तो 2 लाइन मेरी कितनी क्लियर निकलती है जैसे मैं बोलती हूँ, और 2 लाइन बाद फिर मैं ऐसे ही बोलने लगती हूँ। मैं कितना भी कंट्रोल करूँ, होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग। हाँ। तो सबने स्ट्रेस बता दिया, साइड इफेक्ट बता दिया, लेकिन डायग्नोज कुछ भी नहीं किया। आपके परिवार में प्रॉब्लम कौन क्या कौन है? रहते हैं? आप हैं, ये हैं, और कौन? और इनके भाई है। इनके भाई भी रहते हैं। तो हाल ही में कोई जन्मदिन आपने सेलिब्रेट किया हो, बड़ा अच्छा महसूस हुआ हो, गुड फीलिंग आई? नहीं। हाँ? नहीं। तो जन्मदिन सेलिब्रेशन? नहीं। आपका अपना बर्थडे कब आता है? 14 सितंबर को आता 14 है। सितंबर। तो बर्थडे में केक वेक काटा था, खुशी बनाई थी, इन्होंने कोई गिफ्ट दिया था? नहीं, केक क्यों नहीं दिया भाई? सर ये घर चलेगा तो फिर नींद का बाद एग्जाम में देना था ना। बाद मैंने बोला था, नहीं दिया। हाँ। हाँ, बोला था। अच्छा ठीक है, हम लोग फिर क्या करेंगे, अभी हम एक मीटिंग कर रहे हैं, है ना, फिर हम आपसे सारी चीजें फिर से दोबारा डिस्कस करेंगे। नहीं, मुझे ये बताओ, स्ट्रेस डिप्रेशन साइड इफेक्ट तो सब डॉक्टर ने बता दिया, आप लोगों ने क्या डायग्नोज किया है, मतलब क्या है? हमें लग रहा है कि परेशान हैं आप, एक रिलैक्स नहीं है। स्ट्रेस और डिप्रेशन ही है ना, बस हाँ, वही प्रॉब्लम है। और कुछ नहीं अब है ये ना? वो आपको परेशान कर रही है समस्याएं, उसी प्रॉब्लम को और फाइन ट्यून करके समझने के लिए हम मीटिंग रखी है। ठीक है, तो हम कल आपको सब बता देंगे क्या क्या इश्यूज है। आज डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा? कल मॉर्निंग। कल मॉर्निंग में? ठीक है, आप अच्छे से बैठ जाएं और उनसे गिफ्ट मांगे जो इन्होंने नहीं दिया। ठीक है, जाऊँ मैं? जी। थैंक यू। Mental status. On mental status examination, general appearance and behavior. She's a mesomorphic built female, entered the room unaided, accompanied by husband with a bilateral wide arm swing gait. She sat on the chair provided, did greet the interviewer. Dusky complexion with masked facial expressions. She was wearing a pullover and an old looking pajama with shawl, with sweater. Thin hair but properly oiled in a single braid. Clothes appeared clean, appeared as per the stated age. Scanning her surroundings, anxious when interviewed, appeared to be in touch with her surroundings. Eye contact was gazing and initiated and sustained. Attitude was cooperative with overfamiliar manner of relating. Rapport established with ease. Psychomotor activity was decreased. Speech increased in tone, volume, and intensity. Relevant, clear, coherent. Goal directed with decreased reaction time. Speaking in a childlike manner. Attention was arousable and sustained. Oriented to time, place, and person.
General information, she had a adequate fund of information. Mood अच्छा है. Affect was anxious with restricted range and reactivity. So thought stream, there was prolixity in speech. Form, no formal thought disorder. Possession was self. Content was preoccupied with her somatic complaints. And the judgment test, social, personal, was intact. And insight was grade 3 about the illness. So she is kept on the diet difference. What was the mental status observation? Though we didn't do a comprehensive mental status, we just concentrated on childlike behavior, जो हमारा purpose था. Then we just tried to elicit some effective display, which it was there. क्या है आप लोगों का observation? And you have to actually, before starting an interview, specifically exams में case conference में, you have to introduce the audience. ये तो तभी बोलेगा सब हंस रहे हैं. वो वहीं पे ही, if you say, this is for your, we want to talk or discuss, क्या बोलोगे? आपके केस के बारे में बात कर रहे हैं तो आपसे बात. वो नीरज आ गया तो फिर केस पकड़ लेगा बस. Which is the most easy language which you can tell them? आपकी बीमारी के बारे में. वो कहता मैं बीमारी नहीं हूँ. दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या है. बीमारी बोलते हैं ना वो करना है वाला. यही तो प्रॉब्लम है. आप भी यहीं ले आए, वो भी यहीं ले आए. You can use this room for interview. because यहाँ noise नहीं, distraction patient के लिए भी नहीं होगा, हमारे लिए भी. You could very concentrate on subtle stuff. The patient, otherwise other areas there are a lot of noise. So if you have a very interesting patient, bring patient here across the table, and this will help you in doing good mental status examination and refining your skills for mental status examination. हाँ तो इसमें इनमें क्या मिला? So the eye contact with the interviewer was initiated with उसको क्या कहते हैं? Distractible. She was pretty distractible. That is why she was वो हंसा. Inflection same thing, up and down body. Emotional ability. Ability था because none of the effects were predominated. It changed throughout. और प्लस देखोगे तो ability में भी she went down when I tried to give her a birthday and happy situation. She smiled but वो बहुत ही slow था. मतलब वो मोबाइल नहीं था जितना होना चाहिए. Single goal पे she broke into it and she didn't go as showed as the other part of it. Maybe something was stopping. She didn't go into the other goal like cheerfulness and that. End में जाते हुए ना थोड़ा smile भी हाँ gift लेती हूँ उनसे, but that was not which was very communicable or what is the baseline पे आ गई, down की baseline पे आ गई. And at few places she was irritable, where she was questioning us कि आप क्या समझ रहे हो हमारे को बताओ. Childlike. एक ही फोन में गई है ना, spontaneously गई, and then other situations we couldn't drag. फिर लेबिलिटी तब नहीं बोल पाएंगे, ये मोबिलिटी है, स्पॉन्टेनिटी चलेंगे अपने आप. बट जब हम लोग इंड्यूस कर रहे हैं तो महीने के पेशेंट ले पाए लोग, जैसे आप खुशी में ले जाओ खुशी में चले जाए. And effect, the effect. Phenomenal, right? हाँ? और हाँ? इस पर ही बोल सकते हैं. और कुछ उसे इफेक्ट में बोलेंगे एलिवेशन या उसे कुछ और कम बोलूं. She said she started conversation. She had so many thoughts. वो था बोल सकते हैं, बट जो बात करनी जो स्पीड थी, एक्सलेरेट थॉट
speech कहाँ पे maybe she was saying I'm बोलना पड़ता है अब वो आप अगर टोटल स्पीच को कलेक्ट करके बहुत सारे चीजें कलेक्ट कर लेते तो वो वॉल्यूम बोल सकते हैं कि हाँ बहुत वॉल्यूम मिल गया बट वो जो वॉल्यूम की जो आउटपुट थी वो स्लो थी ज़्यादा फास्ट थी और कुछ whether she was very forthcoming Over familiar. और familiar Over. उस ओवर फेमिलियरिटी को आप बोल करके देखते ओवर फेमिलियर थी ये तो सब इनसे भी कंफर्टेबल हो गए हमसे भी कंफर्टेबल हो गए विदाउट एस्टैब्लिशिंग ऑलमोस्ट नहीं रहा और कुछ Smiling to be considered as a reference. डिफरेंस का मतलब क्या है She believed that not here, but the example she gave was कि बाहर भी सब मुझे देखकर smile करते थे, not the interview which happened there, but अगर मैं she was saying सब मुझे देखकर that is why it is both neutral actions typical significance उसे रेफरेंस करते हैं but actually persecutive background में होना चाहिए सारा का सारा referential persecutive background कहीं नहीं she knows that having some issue other people they are probably trying to make fun of me उस तब इधर तो हुआ वो बोला वो ऐसे आसपास के लोग बोलते हैं ये कैसे कर रही है and she is talking in that manner so with a query both all of this जो ये चाइल्ड लाइक तरीके से बात कर रहे हैं एवरीथिंग एक महीने से ही हो रहा है तो सर उसके बाद से शी हैज बीन सेइंग दैट एवरीबॉडी इज मेकिंग फन ऑफ हर एंड सो सर would that be attributed to that only nothing apart maybe from she is behaving in that manner probably anticipate करनी but we can always put a query of reference vividly बोलने yesterday when I was talking to her like she said मैंने आपसे बात की थी she was fine all throughout the interview so एक ब्रदर थे सर थोड़ा कोल्ड ड्रिंक और समोसा लेकर गए so she was also sitting with me तो भी मतलब I smiled कि अरे इसकी क्या जरूरत है I was talking to brother and she thought कि अरे आप मेरे पे हंस रही हो and then it took us a while to calm her down नहीं हम ऐसे नहीं हंस रहे तो सर what I can then that can be a reference so your neutral action was perceived in a wrong and then she took it उसके कुछ themes attached नहीं है but then this is can be a reference positive emotion वीडियो भी था उनका जिसमें जैसे इनका एक डेज सा एक्सप्रेशन था और माउथ वाज हाफ I wanted ओपन this word please look यस सर questioning look शॉक मतलब she looked like her eyes were wide open mouth was half open वो and अभी she भी था looked dazed between shades you could see the questioning look यस सर ये एक वीडियो भी था और ये एक मंथ से since the time she has been saying कि मैंने ये सारी दवाई एक साथ खा ली थी ये तब से एक महीने से सर ऐसा हो रहा है तो actually first year second year you should not think about slotting the question you have to actually pick up whatever you can do between the lines pick up करना है सारा चीज हो सकता है कुछ सही निकलेगा you then ultimately then otherwise वो आपका you as a psychiatrist will add lot of things in your intuitive basket otherwise symptom देख के इलाज करना तो very easy उसमें बहुत मार्जिन और बढ़ जाते हैं जब 50 60 70 80 क्वेश्चन देखते हैं उसमें 40 क्वेश्चन तो ऐसे चले जाते हैं क्योंकि वो तो हम लोग टाइम ही नहीं देते ना सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट करते हैं इट इज नॉट राइट है पेशेंट को देखेंगे यू हैव टू पिक अप स्मॉल थिंग्स शी वाज इन बिटवीन शी वाज गेटिंग दिस क्वेश्चन वो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो कहाँ से आ रही पता नहीं ड्रग इंड्यूस्ड है कि नहीं है एंटीडिप्रेसेंट चल रहा था इसलिए वहाँ से आ रही है and she is probably not restless want to speak more and more and being referential around surroundings and went into a depressive phase. There is no emotional upheaval तो चल ही रहा है हो सकता है diagnosis उनके हस्बैंड ने कहा कि ये नीट का एग्जाम देने गए वो 21 ईयर से ओल्ड है तो उनका 4 साल से ड्रॉप भी हो रहा था तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर husband ने बोला who gave me that So for BMS. She had been school dropped out since last 3 years. It can be because school pass out in 17 and now she's 22. So
These very important. So she did her technician diploma and others in the 3 years. But वो जो नीट था वो करना चाह रही थी. NEET, she was asking to do PMS, but she was not able to मतलब qualify. clear नहीं हुई अभी तक. No, sir, appeared this time, but she was not able to qualify the exam. Why? Marks were less. This illness started during that phase. Yes, sir. Can this be a perpetuating factor? So exam. देखना पड़ेगा उनके ambitions कितना है. Then this could even be one more factor. One. But to be open about all the possibilities. Very good. So I've kept her on the diagnosis of dissociative disorder unspecified because she is consistently complaining of headache and rigidity and difficulty in walking. Otherwise, when we are not looking, she is walking fine, and there is no normal tone and power in all the upper limbs and lower limbs. And there is no tongue tremors also not present, but she is reporting of difficulty in speaking. Last when she took this antidepressant? So she took antipsychotic. She took on 20. So this was in January. So for 2 days only she took Dothepin. Antipsychotic she took for 2-3 days. She was taking haloperidol and olanzapine. Here she was not in any treatment. No. Or any other possibility? 3 possibilities, no? You're saying emotional unstable personality traits. So emotionally unstable personality. एक बॉयफ्रेंड था, वो बेचारा हस्बैंड बन गया है. दो उसके सेल्फ हार्म थे, तो ना तो रिलेशनशिप में इशू है ना सेल्फ हार्म में, और वो कहीं ना कहीं डिप्लोमा वगैरह कर आके अपना नीट भी देना चाह रही थी, वो नहीं कर पा रही, तो फिर अपनी मर्जी से उसने शादी करी. तो कैसे हो जाएगा? इंस्टेबिलिटी कहाँ है? इंस्टेबिलिटी मिलेगा ना. गिफ्ट उनके हस्बैंड ने दिया, उसने मांग लिया. So we as reported, she is telling that I want to talk, and the distractibility was present, but we were not able to complete the criteria for mania, and there was no history as per by husband for aggressive outbursts. आपने बोला history. Yes, sir. Can't this be part of affecting instability? वो outbursts किस तरह के थे? अगर वो impulsive थे, they were impulsive. लेकर सकते थे. अगर ये pre-morbid भी था, अगर 2 साल के पहले भी था, कम frequency में था तो सकता है. वो देखना पड़ेगा. नहीं, क्या possibility? Sir, I think it can be stronic personality with dissociation. So because there is continuously she seeks for attention right now, so in the interview also she was seeking for attention. And so there have been dissociative features from the past that it started with a headache. There was an episode where she was admitted to the hospital as well for a stomach ache. And the headache was continuous throughout the marriage as well as the relationship. After that, when she developed EPS because she was given this antipsychotic. So ancestors like that's also one of the causes. And जो past history है, community tuberculosis की थी 2017 में, where she was adequately treated for TB. So as per reported by husband. वो नहीं पता. Currently, so the child like way she's talking. So any other possibility? Since historian और क्या क्या criteria are? Parents, like she is taking care of her appearance. Every day I have seen her wear clothes and get ready. Why they were not present before 20 years of age? I think because we do not have an informant to tell us the personality. So you are telling from there. So currently, but if the regulation of preferences present, then can be. What they has to
Center of फिजिकल सिम्टम है, ये तो कहीं भी जा सकता है, most of the cases में। center of attraction, yeah. Attention seeking behavior. So effective behavior is important to the mind. Any other possibility? Could be because she is also saying could be Give us a mania. conceptualization. पूरा case like Encouraging the incident with Shani explaining correctly. Cannot that be also explained by seeking for attention right now as well? Can सिचुएशन होगा तो फिर she will invite all those kind of things. कि आप मेरे पे क्यों नहीं हंस? He's actually trying to pick up those people जो they are smiling in that sense. Anything negative positive दोनों हो सकता है. But और एक और चीज़ है कि वो अभी इतना ज़्यादा इमोशनल उसमें है कि इस तरह का जो पिक्चर अभी आ रहा है जो आपको लग रहा है हिस्टोरिक है, ये अगर एक पैटर्न से आता तो हम मान सकते हैं कि कोई रेस्टोरेंट में गई वहाँ भी इस तरह से करने लगी और ये जो अभी बहुत सारी चीज़ें जो बढ़ गई हैं इससे ना हो, मतलब बेसिकली पर्सनैलिटीज आपके बहुत सारे रिएक्शन डिफाइन करेंगे ट्रेड से हो सकता है राइट, बट वो हमारे पास डिटेल डेफिनेटली एट सम पॉइंट कंफर्म करने के लिए आईपीडी लगा सकते हैं, आईपीडी से पता चलेगा आईपीडी इज नॉट डिफर विद स्टेट एंड ट्रेड, ठीक है। और ही सेइंग प्रोटोन व्हाट इज द होल conceptualization, एक one lady one girl who is 22 and has been in a long courtship period and against the family wishes, going through herself from coming out of an adolescence phase. 10 days before she had been certified जो marriage of 10 दिन पहले हुई है, and the family support है, it is very very poor. Because on either side she doesn't have any support. Career wise she is struggling. Husband क्या करते हैं? So he is a technician only in Chandra Diagnostics. The husband is technician, financial security. The house which they own is in their own house. So rented house. It's a rented house. बहुत बड़ा issue होता है rented house हमारी society में. इतनी सारी जो insecurities हैं going through this phase, aren't they enough to actually induce these dissociations? But at the same time, this giggling, this childlike, this is becoming more pervasive. Her having more instability, at least cross-sectionally, breaking into depression. The reasons maybe she has not come out of these reasons. She is always evolving on those 2 to 3 prescriptions which she has written. What she says is that she is impulsive, which we are not very clear. Impulsivity फिर आएगी तो किनके डोमेन्स में आएगी, कैसे कैसे आएगी, उसमें क्या क्या रिएक्शन होंगे, पैटर्न बनता है ना, जब बड़े पर्सनैलिटी का पेशेंट देखते हैं तो इंटेंसिटी की सिविरिटी और इंटेंसिटी भी चेंज होती है, so we are not sure, है ना। And she is saying I want to speak aloud. Definitely she is more overfamiliar, forthcoming and overfamiliar. Maybe explained by historicity traits, because maybe she can later break into prodromal psychosis, and she has developed external side which is very very less antipsychotics, poor tolerance to antipsychotics. So we need more Data. information, more evaluation. Maybe yes, one possibility is bipolarity. If there are some psychosis, so psychosis also are. Will she still qualify as an adolescent? No. Adolescent, 22 ना? Adolescent कब से रहता है? So 19. 16 से 19 मतलब 12 से
But Athara they outfits. also early outfit interference with the So अभी hardcore bipolar features तो नहीं मिल रहे हैं. signs of So maybe mood disorder, NOS can be one BD. Anything else? Organicity. Organicity. हिस्टोनिसिटी के लिए हमको और हिस्ट्री चाहिए ना, क्या ये जैसी गैदरिंग होती है, या फ्रेंड्स आते हैं, whether she does something of this sort to gain attention, when she is not being given attention, यहाँ पे आने के बाद तो हमारा attention मिल रहा था. हाँ वो आज बोला ही थी. हाँ but वो एक राउंड के फेज में हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में आके करना, उससे हम लोग पर्सनालिटी का इंप्रेशन ये पैटर्न मिल रहा है. And so also she has been a licensed technician for quite some time, so she's familiar with the hospital setting and everything. Yes. Yes. She is familiar with doctors. Maybe जो familiarity है वजह से organicity. Well, organicity. She's having some organicity. What organicity? Why organicity? Huh? Look here, maybe. Organs. What things goes in favor of organicity? Huh? She is regressed so regressed acutely. Okay. So the functional disorder may be poor intolerance to antibiotics. एक reason. इसमें कोई ना कोई कैल्शियम ग्रैनुला पड़ा हो कुछ हो, तो छोटे से 1.5 मिलीग्राम एलिप्रिडॉल पे डिस्टोनिया होने का चांस. Okay. So your comments. So we are basically closing it because we need more information. Information नहीं होगा ना तो discussion में presumptions आ जाएंगे. तो अभी तो इतना ही लग रहा है कि she is going through a lot. Any 22-year-old female going through this phase might grow into this regressive behaviors, dissociative behaviors, or mood symptoms later on can turn into, if the stress continues, she can break into psychosis. So I agree with everything, whatever audience have said. You write it in the file. And I brought about her poor adjustment could be because of the underlying personality traits, maybe histrionic, maybe borderline, emotionally unstable, maybe. We need more data. Okay. Antidepressants, as per me, I will go with less antidepressant and maybe see, put her through some therapy sessions, observe, and then take it forward. Thyroid profile, one thing which we will do. But you have presented a tough case in a short span of time with a very good confident body language. I would shake up with this kind of a case because a lot of information we don't have. So comments? Huh? Yeah, well, presentation. मैं समझा पहले खिला देगा तो. Actually, there is a misconception from the starting. You have mentioned the patient information reliable and accurate study. I think you have found the diagnosis already, but still the diagnosis Was not. One thing we need to rule out the family members also, as well as the friends also. How she behaved on you. We need to assess because she's actually spoken actually the way of tone is changing. I thought maybe there will be a like psychology management also needed for that, like IQ assessment. Maybe there will be a like learning disability or something like not learning disability, like mental intelligence, borderline mental intelligence. Because of her age, like borderline mental intelligence patients also seen in like many areas, like engineers, doctors, like sports as well. Might be she changing for last 5 years. Might according to her, might I thought there is a personality assessment also needed. Yes. एक चीज और है, one thing they have a point कि she wants to do so many things. नीट भी करना चाहती हैं, एसयूमी टेक्नीशियन भी कर लिया है, डिप्लोमा भी कर लिया है,
So she wants to do BMS only, but for working she has been assigned as a ICU technician also by the husband only. अर्ली एज में मैरिज हो गई है, Yes, sir. यही इम्पल्सिविटी तो नहीं है. Her any remorse for any of the action she has, not now, maybe when she comes out. So again, we have to gather the True. information. ये सब lacunae, मतलब थोड़ा gaps. We need to be clear. History में सब आ जाना चाहिए. That is why to actually practice in short span of time, need to gather a lot of information, give it a shape and present it. तो information कम रहेगी तो shape ही नहीं देता. Problem यहाँ पे है. Adolescents near these age cases are a little difficult because and with no prior history, तो फिर वो problem हो जाए. Either in impulsive behavior, you can rule out very scales up. So maybe हम लोग ऐसे केस दे सकते हैं कॉन्फ्रेंस में जो इनकी इंफॉर्मेशन हो उसके बारे में, सो दैट एक आइडियल केस प्रेजेंटेशन हो जिसमें हम लोग क्वेश्चन करें. अदरवाइज वो फिर बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं तो फिल नहीं कर पाते. मैनेजमेंट So currently started on एक साइकोथेरेपी प्लान कर लेते हैं and एक पर्सनालिटी असेसमेंट. बेसिकली बेटर इफ you do it with IPD. बेटर टेस्ट प्लान कर सकते हैं. रोशाक टेस्ट आप लोग खुद कर सकते हैं. कार्ड्स लाके स्टार्ट डूइंग अप्लाइंग, काम उसमें लिखा हुआ है, ऑनलाइन भी है. एंड देन इफ यू प्रैक्टिस इट इन फ्यू पेशेंट्स यू नो कि हम लोग क्यों कराते हैं, किस लिए कराते हैं, क्या पकड़ते हैं. और फिर उसको याद करने की जरूरत भी नहीं होगी एग्जाम टाइम. कौन सा कार्ड कौन सा है, कलर कार्ड कौन सा है ना, एक्रोमेटिक कार्ड्स कौन से हैं, वो सब फिर याद जब आप वो देख लेंगे कर लेंगे इट इज रियली इंटरेस्टिंग. ओके, थैंक यू. Thank you. Your comments? Your comments? There were many but presentation wise you would have made a less graph. Yes. Yes, ma'am. I have also seen only one diagnosis of diabetes should be. Thank you. कभी बच्चा बोलता है क्या वो देती तो सोचे कि प्रेजेंटेशन में कितनी जल्दी है. मैम जल्दी दो मुझे, मैं कर रही हूँ. मैम मुझे वो रोस्टर भेजना, कॉन्टेक्ट मेरा फोन का है. मुझे लगा इसको टाइम करने के लिए पेशेंट आया.